Honorable guests on the dais, my learned friends, the scholars, thinkers, philosophers, MLAs, MPs, and many dignitaries who have come here for this function. When I see a large gathering of all the students, my young students, I am reminded of the day of 1995-96, when the very first Parliament of Science, Religion and Philosophy was held in the name of philosopher Saint Sri Jnaneshwara and all the great saints and sages of India and the world. And along with the very first sentence was written, and the words of wisdom which spoke the great noble son of India, Swami Vivekananda, then, union of science and religion / spirituality alone will bring harmony and peace to mankind. मुझे याद आती है, on that occasion I had the fortune of going to Rome to meet the Pope Paul II then. It was very difficult to meet him, but there was a very great conference. 7,000 delegates sitting in the audience, and I had the fortune of having some place in the front row. But I was not knowing the protocol. I had gone to invite him for the World Parliament of Religion that time. मुझे पता नहीं था कि प्रोटोकॉल होता है. The Pope Paul II of Rome, symbolizing the entire Christian community, he is more than a president of any country. पता नहीं भाई, जब पोप पॉल II साहब नीचे आ गए, हम सब लोग खड़े थे. How to address the Pope was the main issue. I was not knowing this protocol. मुझे याद आती है, when the Pope Paul II came down, there were 11 ministers following him, holding his robe. पता नहीं मेरे माथे पे कुमकुम भी था. आने के बाद he was just blessing the audience. He was not touching or trying to shake hand with him. When the Pope Paul II Honorable came, His Excellency, I just said, because when he had moved about 2-3 steps beyond me, but I shouted literally, Your Excellency, Honorable Pope Paul Sahab, I have come here as a humble servant of humanity. The first sentence which stuck to my mind, मानवता का एक पुजारी के नाते मैं भारत से आया हूँ, इंडिया से. I have come here from India, Mother India, as a humble servant of humanity. And the moment I said this, Pope Paul came back. Never in the history it happens. But Pope Paul II Honorable, he moved back again and came to me, and we had a shake hand with each other. And he kept his both hands on my head, and only he said, I bless you, young man. The entire audience was stunned. Why I am telling this? The whole gist and the essence of this conference, the students' conference, strengthening democracy and inspiring youth. एक शब्द में बड़ा संदेश है. You have just heard, friends, the great thinker, philosopher, a politician, Venkaiah Naidu Sahab, and his words of wisdom. And Mr. our Ram Charan Sahab, who is the most world famous management guru from India. बाकी तो सुनना है. दो बच्चों ने जो कहा,
वो भी बड़ा इंस्पायरिंग था, विथ अ पैशन एंड फायर इन द बेली। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको, ये जो सामने बड़ा पिक्चर दिखाया है, सारे इतिहास है स्वतंत्रता के मायने में जिन्होंने बलिदान दिया। सबसे ऊपर है महात्मा गांधी, नीचे है वल्लभ भाई पटेल है, नेहरू है, बड़े बड़े नेता है। मुझे वो भी याद आ गई। आई एम नॉट स्पीकिंग एनी पॉलिटिक्स, बट आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, at the mid-stroke of 15th of August. You know the whole story of what India was. How great fight for 150 years of time. कितना बलिदान था, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, तिलक हो, सारे बाकी लोग हो। लेकिन आपको याद होगा कि when the Honorable Prime Minister Pandit Nehru, the first Prime Minister, he is taking an oath, being the first Prime Minister of India. But he says, friends, at this mid-stroke of 15th of August, I stand before you as the first servant of India and then the Prime Minister of India. आपको सारी बात मालूम है, the first Prime Minister to the 14th Prime Minister नरेंद्र मोदी साहब। हर एक ने अपने जीवन में एक पैशन एंड अ फायर इन द बेली, सेवा की भाव है, मानवता का भाव है। भारतीय संस्कृति, परंपरा, तत्वज्ञान का सुंदर संदेश देने की बात कही गई। नाम तो ज़्यादा लंबी कथा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन टुडे ऑल्सो यू कैन रिमेंबर फ्रेंड्स, यू आर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड what this engineering stands for. अभी ये गूगल का ज़माना है, सारी बातें हाईली टेक्निकल एडवांसमेंट की है। ऐसे ज़माने में एक ही सिद्धता हुई जो विवेकानंद ने कही थी, आफ्टर ऑल द साइंटिफिक इनोवेशंस एंड डिस्क्राइब द होल वर्ल्ड, द गूगल और द फेसबुक और एनी अदर नेम यू टेक will prove what Indian men, Indian culture used to say about 5,000 years back. बहुत सुंदर चिंतन है। मुझे खुशी है कि अभी अभी छोटी फिल्म दिखाई गई। एक ज़माना था जब संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, कनकदास हो, पुरंदरदास हो, जितने भी नाम ले लो, इनके मुख से एक ही शब्द निकल आता था, that the entire universe is a manifestation of your intelligence and consciousness. सत्य की खोज। और आज ये संस्था कम से कम संत ज्ञानेश्वर टू अल्बर्ट आइंस्टाइन की चर्चा करती है। ये जो डोम बना हमने नहीं बनाया भाई, बन गया वो। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। आई एम अ फार्मर्स सन कमिंग फ्रॉम माई विलेज। Let me tell you honestly, friends, now the whole world is giving a recognition to this dome situated in some place in Pune, and it is being known and understood by people of world community, the greatest scientists, men of religion, men of philosophy. They say it is a spiritually oriented scientific laboratory है वो, ये प्रयोगशाला है। जैसे हमारे नायडू साहब ने भी कहा, ये तो अनदर वंडर बन जाएगा भाई। वो भाषा ठीक है, लेकिन यू एंड मी, व्हाट इज माय ड्यूटी, व्हाट इज योर ड्यूटी? माय ड्यूटी एज अ टीचर, योर ड्यूटी एज अ स्टूडेंट और अ लर्नर, टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट ट्रुथ और द अल्टीमेट रियलिटी। ऐसी भाषा आ गई अभी। We have a school of consciousness and reality. ये लंबी बातें हैं बड़ी, लेकिन इसको साइंटिफिक बेस है। अल्टीमेट सत्य की खोज है। ईश्वर की संकल्पना क्या है? ईश्वर ये शक्ति है, व्यक्ति नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों का जिक्र होता है। एंड माई अपील टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली द स्टूडेंट्स, वुड बी, जरा गौर से देखो।
समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करो और बाद में रियलाइजेशन हो, अनुभूति। सबसे बड़ी चीज़ है अनुभूति की। जब तक आप समझते नहीं तो आपको मालूम है कि कोरोना वायरस हुआ, द होल वर्ल्ड, रिमेंबर, including all the prime ministers, the president, the defense ministers, and every one of us, like including me, we were all hiding behind the doors. What was the reason? क्या हुआ था भाई? And you know it very well that the entire world is passing through a very chaotic stage, horrifying situation world over. चारा क्या है भाई? यूक्रेन की बात हो, पैलेस्टाइन की बात हो, इसराइल की बात हो, क्या चल रहा है भाई? और भारत के अपने शांति प्रिय देश में भी वी आर लिटिल कंफ्यूज्ड व्हाट वे टू गो एंड व्हाट वे नॉट टू गो। ऐसी लंबी बातें करने में अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगा। इट्स ऑलरेडी 1:35। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु हैव कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम तमिलनाडु टू कश्मीर, and all those great men who have occupied the chairs on the stage, including the Honorable former Vice President, Mahana Sahab and all others, and to all of you friends, thank you so much. Thank you.